1 second. Hey guys, welcome. I'm just getting started, guys. We're just getting started. In the meantime, let me know if you have any DM request or anything that you want to do. I can help you out. Inshallah, we will keep things a little bit quieter today and a little bit fast. Okay, hope everyone is having a great Thursday. Let's unlock all. All right, we're good to go. Guys, I want to take a couple minutes. Not couple minutes. I'll take some time today to discuss to discuss के किन किन की जो deal है you guys are waiting on response. Okay, I want to spend some time कि जो deal आपकी हैं और आप हमारे response का wait कर रहे हैं. I need to know. Okay. I have this submission. Okay, let me go with the DMs in the meantime. Then after I have more people, I'll check everyone's things. I'll check Heather's DM right now. Number 10. Okay, I showed you this property yesterday. He's demanding 37. My offer is 27. I think ARV it's good, like 150, 30, 120. I submit the property, check the comms. I also checked. I want you to call him and discuss. I think we can make a deal. Okay, that's good. That's good. Is it? It looks like it might be rented. 98 years. Okay. Yeah, we can definitely call on this. He's demanding 37. Your offer was 27, and ARV is 150, 30, 20. Okay. Okay, let's actually call him because I feel like we could be close on this. The only thing is I need to look at the pictures. Guys, usually ऐसी प्रॉपर्टीज में जिसमें सिर्फ आपको एक पिक्चर दिख रही है और घर का कुछ नहीं दिख रहा एंड 98 डेज से लगी हुई है, ठीक है. अगर ये 10-20 दिन होती तो मुझे लगता है कि इसमें रेंट है, रेंटर बैठा हुआ है. बट अगर इतने दिन से लगी हुई है दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग कि प्रॉपर्टी नीड्स बिट ऑफ वर्क, ठीक है. क्योंकि इतने दिन से ज़ाहिर ये अंडर कॉन्ट्रैक्ट गई होगी, लोग अंदर गए होंगे, चेक किया होगा, नहीं समझ आया, वापस आ गया, राइट, एंड द property goes back on the market. But let's talk with this guy and see कि क्या बोलता है ये. Please pick up.
Please leave your message. I'm gonna call again. This is bad. He should pick up. Please leave your message for 31375937777. Hey Edgar, hope you're doing well. This is Syed. You've been speaking to Fahim Heather Naki. I'm looking at, we are discussing on the property on the Bacon's Field. We're interested to move forward on this. I believe the counter we got was about 37. I'm working on some of the comps to kind of come up and see where we can meet you in the offer and kind of sign this as soon as possible for our portfolio for the next fix and flip. I just wanted to ask, what is sort of the ARV are you getting on this? Maybe my numbers were a little behind. That's why my offers were a little behind. I wanted to kind of run it by you to see where the ARV is at and hopefully send you a updated offer shortly through Heather Naki. Okay, talk soon. Bye for now. I'll shoot you a quick text as well, and we'll go from there. The thing is, the ARV in this area I kinda know because it's uh, in this west-ish area. Could be around that. Okay, so I'm not too confident, but I feel like this is somewhere we are close. But I'll wait for him to confirm the ARV and then we'll run it one more time. Hey Edgar, hope you're doing well. Just left you a quick voice note. Let me know when you have a time for a quick chat. Chat best. The property at 4-6. Okay. Sent him a text, left him a voice note. Hopefully he will shoot me just ARV and we'll be done. आपके पास अभी कोई जॉब अवेलेबल नहीं है? Heather, not at the moment. Not at the moment. Yes, I'll check DMs, Adnan. Don't worry. Okay, where we are? Okay, so Beaconsfield. Yeah, I think Heather, it's good. Stick with 27. ठीक है, आप अपने अपने नंबर से स्टिक करें. जैसे वो ARV बताता है तो हम थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे आने दें. So हम I think we can go up to 30 on this. Again, depends on कि पूरा घर तो नहीं. अगर घर पूरा ही तोड़ना है then it's a different scenario. Hopefully that's not the case. ठीक है. My best offer with the seller for the position is 10% down. I believe we made an error. Since the larger down payment, seller is second position. Can you let us know if there's a specific reason? Yeah. Same reason he would require a significant down payment. Okay. Heather, देखें, आपने इसको सही समझाया. उसके बाद वो बोल रहा है कि अगर बायर बिल्डिंग ख़रीदता है सेलर फाइनेंस पे और ख़राब कर देता है और फिर डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो क्या होगा, राइट?
तो आप इसको बोलो कि विद द सेकेंड पोजिशन वी आर ब्रिंगिंग द लार्ज डाउन पेमेंट नंबर वन। तो देर इज़ नो इश्यूज़ विद दैट कि हम एक सब बहुत बड़ी लार्ज डाउन पेमेंट जा रहे हैं तो आपके आधे से ज़्यादा पैसे तो उसी वक्त निकल जाएंगे, राइट। सो ओनली यू आर ओनली लेफ्ट विद अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑन द कॉर्नर, ठीक है, नंबर वन। दूसरा जो है फर्स्ट पोजीशन की अगर हम बात करते हैं तो उसको बोलो कि वी विल नॉट, ठीक है, उसको आप अपना क्राइटेरिया बताओ, उसको बताओ कि वी हैव ए मैनेजमेंट कॉस्ट, वी हायर ए मैनेजमेंट कंपनी, नंबर वन। वो मैनेज करती है, हम खुद मैनेज नहीं करते, तो बिल्डिंग की रन डाउन की बात होती नहीं है, ठीक है। नंबर टू, द रीज़न मैं आपको 10% डाउन और लेस मंथली पेमेंट दे रहा हूँ इसी वजह से ताकि मेरे पास मनी लेफ्ट ओवर हो जो को मैं सेव करूँ, अगर कोई प्रॉपर्टी में काम आता है तो मैं उस पैसों से प्रॉपर्टी में काम करवाऊँगा, ठीक है। तो वो समझ रहा ये होगा, उसको ये नहीं लग रहा कि हम भाई खुद काम करेंगे। आपने बोलना कि मैं मैनेजमेंट कंपनी हायर करूँगा, नंबर वन। इफ़ यू वांट आई कैन पुट इट इन द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, हम कॉन्ट्रैक्ट पर लिख देते हैं कि मैनेजमेंट कंपनी लाजमी हायर होगी, हम खुद काम नहीं करेंगे, ठीक है। मैनेजमेंट कंपनी प्रोफेशनल होती तो वो डर रहा है अपनी बिल्डिंग को लेके, नंबर वन। नंबर टू, हमारे कैश फ्लो में ऑलरेडी 10% 10 to 12%, 10 to 12 बोलने कोई मसला नहीं, 10 to 12% हम रिमूव करके रख देते हैं सिर्फ इस वजह से कि फ्यूचर में कोई काम निकलना आए, ठीक है। तो आप इसको एक्सप्लेन करें, दिस इज़ नॉट नॉट गोना बी अ प्रॉब्लम, ठीक है। और उसको बोल देना कि एज लॉन्ग एज वी आर मेकिंग इनफ कैश फ्लो। और उसको तीसरी बात ये बोलना कि अगर हमारी कंपनी या मैं कैश फ्लो बना रहा है, अच्छे पैसे बना रहे हैं, तो हम क्यों एक अच्छे कमाने वाले एसेट को आपको वापस देंगे या क्यों उसको ख़राब करेंगे कि वो हमें इतने पैसे ना बनाए, राइट। तो आप इसको मेंशन करो, ये दो तीन चीज़ें, ही विल अंडरस्टैंड। आई डोंट थिंक दैट्स अ प्रॉब्लम, बट ए गुड नेगोशिएशन, आई लाइक दिस टेक्स्ट, ओके। कि आपने इसको पोलाइटली पूछ लिया है क्या मसला है, और मुझे पता है ये बंदा बहुत इंटरेस्टेड है हमें सेल करने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम से हमारी बात चल रही है इस पर, कि भी वो हर बात का आपको जवाब भी दे रहा है। होपफुली यू गॉट, आप अंडरस्टैंड हो गए होंगे। if if he lends if he lends money and buyer runs, okay, that's the this one could work. The seller is open to financing, the terms make sense for him. He is looking for 250K down on this one at the minimum. um yeah, three years में हम कैसे कर सकते हैं refinance? This is just out of the question, honestly. This one could work well, to at least 3 to get down and remain. The problem, yeah, I mean, is it 3.2 or different? I guess maybe it's different. Okay, yeah, so this is where the sometime issue comes. But if we can do seller finance at let's say apartment, blah blah blah. Yeah, this is good. This is good. I don't think this is a problem. 250K down. He is looking for 250K down. One is the minimum a balloon of 3 years, and sees the attached rental and expense and also 1 point equals blah blah blah. Heather, have you given a second position on it? Probably not, right? Probably not.
आई थिंक प्रॉब्ली सेकंड पोजीशन कर सकते हैं इसमें, क्योंकि इसने 3 साल का बलून फिर भी मेक सेंस नहीं करेगा। तो 3 साल का फिर भी मेक सेंस नहीं करेगा। देयर इज नो नंबर ऑफ हिम। You kidding me? Let me call and see what we can do. Hello. Thank you for your call today. Please leave a message, and we'll get back to you as soon as possible. Yeah, Heather, you probably need to get a number on this. It's a company. Um, but get a number, I'll call. But either way, no matter what, 3 years makes sense नहीं करेगा तब भी। मसला इसका ये है कि we have to, yeah, we can do maybe 5, okay, we can do maybe 5, और extension का clause डाल सकते हैं, but 3 साल में it's very important, very hard, okay. Will not have a refinance, we even have to put money from the pocket, okay. तो refinance कर सकते हैं, but उसको बोल देना कि second position की बात कर लें और number ले लें, we can discuss more, ठीक है। He said this could work, तो उसको बस negotiate थोड़ा सा करना पड़ेगा position पे। This one is 35K down. This is concerning कि वो खुद क्यों ये rent नहीं कर पा रहे। House is okay. House is okay. There we go. Let's see. This one work as well. That's about $800 a month. Imagine that. The problem is multifamily and it has 4 unit and has no operating income. Heather, this could be, honestly looking at this, it tells me it's a red flag. ठीक है, इस वजह से कि भले यूनिट अच्छे हैं, मैं समझता हूँ, बट रेंट पे नहीं गए हैं। और yeah, that could be the location that's very bad or something. I don't know. I would recommend just um, figuring this out another way. Yeah, I mean, that's interesting. Yeah, yeah, I think probably not a good idea. अगर ये नेट ऑपरेटिंग नहीं दे रहा, इसका मतलब कुछ और मसला है। इट्स बिगर देन दैट। और हम किसी भी इन्वेस्टर को इस घर में नहीं दाखिल कर सकते और बोलते कि भाई नेट ऑपरेटिंग इनकम नहीं है और इसको रेंट नहीं हो पा रहा है अभी तक। That's gonna be bad sign. Okay, so I'm just gonna move on to the next one. Okay, it has a mortgage calculation is below the cash and cash negative. Should I give an offer? Yes.
यूजुअली अगर हाइब्रिड डील है तो हाइब्रिड डील, क्योंकि आप दो लोगों को पे कर होते हैं, बैंक को और सेलर को, तो कैश एंड कैश यूजुअली इतना ख़ास नहीं होता है, राइट। बट अगर थोड़ा रेंट इंटरेस्ट रेट थोड़ा बेहतर होता तो भी अच्छी डील होती। 70,000, yeah, it will never be able to cash flow. 2 or 4 units, why does it say 2 or 4 units? Okay, 1 bedroom, full dryers. Yeah, looks like it's okay. Multi-unit. Um, let's see. It has a mortgage. Should I give an offer? इसको आप ऑफर दे दें, बट ये मल्टी यूनिट है। इसका मतलब है कि देखिए, मैंने आपको बताया था कि हम उस बंदे को भेज सकते हैं ये घर जो बंदा खुद रहना चाह रहा है, ठीक है। बट क्योंकि ये मल्टी यूनिट है तो 2 यूनिट है, तो इन्वेस्टर खुद रहने वाली बात नहीं हो सकती, क्योंकि ये इन्वेस्टर का ही होगा। दैट बीइंग सेड, इन्वेस्टर के लिए कैश ऑन कैश नेगेटिव होगा। अगर ये सिंगल फैमिली होता ना तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, राइट। बट अगर ये मल्टी फैमिली है, उस पर लोन है, और अच्छा खासा मॉर्गेज है, loan balance, that's the issue. Heather, give him this offer, give him this offer for now. आपके नंबर ठीक है, एंट्री कॉस्ट काफ़ी लो है, तो आई थिंक गिव इट दिस ऑफर, वी विल सी, ठीक है। बट इस पे अपनी होप्स ऊपर नहीं करना, बिकॉज आई थिंक इट विल बी वेरी टफ। जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, यू कैन फाइंड बेटर प्रॉपर्टीज देयर, बट गिव हिम दिस ऑफर जस्ट टू सी। अगर वो ऑफर नहीं लेता तो उससे ये पूछ लेना कि इस तरह की मुझे और प्रॉपर्टीज देते हैं मॉर्गेज टेक ओवर की, देन ही कैन टेल यू। Said run second position on this. Agents say the seller has identified a couple of opportunity to invest in buying much bigger building. You're welcome to send the terms of your offer. I'm happy to present it, but please keep in mind that he's looking to get all his money out. Thank you. Yeah, definitely not. We cannot do all his money at $2 million. I can try to run a second position. Do we have net income? Yeah. Equity. Okay, guys, I have to, again, I'm at my parents' house, so I have to leave at 12. मैं जब भी थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग के क्वेश्चन पे फोकस कर लूँ, and then hopefully on Friday I'm gonna be here, and then on Monday I'll be back home. Okay, let's see. कितने की है? 2.2 million 5 2.25500, I think, yeah. और नेट ऑपरेटिंग इनकम है 158,414। गाइस, अगर आप बड़ी बिल्डिंग को देख रहे हैं ना, तो आपने सिर्फ ये देखना है परचेस प्राइस और नेट ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। जैसे ही आपको नेट ऑपरेटिंग इनकम दिखे, आपने कैलकुलेटर खोलना है, पूरा नंबर डालना है, 158,414, 158,414, इसको डिवाइड करेंगे 12 से, 13,201। Okay, that's the net operating income, 13,201. Okay, now वो बोल रहा है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कैश चाहिए, right, which we can't right now unless I'm okay 0. Okay, let's see. अगर वो 35% कैरी करता है, उसको चलो हम बोलते हैं कि आप कैरी कर लो 60%।
बायर को 5,000 जेब से डालने पड़ेंगे. Let's make it 55. Okay, Heather, this is probably what we need to do, or it's probably what it will work. We can do 5. Heather, I'm going to send you this screenshot, but again, please do not mention the amortization. ठीक है, हम amortization mention नहीं करते, उनको नहीं समझ आएगा क्या amortization है उसकी. But इसको ये ज़रूर बता देना कि we are doing second position. So ATM. Okay, let's move on to the next one. 5, 6. Okay, 5, 811. Okay, क्या बोलता है? The property is a loan of 84K. Okay, property has a loan. The property has a monthly loan of 8K. Yeah, not much we can do, Heather. $8,000 on this. I don't feel like this is correct. ठीक है? I don't feel like this is correct unless कि आपने उससे confirm किया है. अगर 8,000 उसका लोन है per month, 8,000 times by. Yeah, I don't think that's correct. Heather, make sure to confirm this one. 8,000 loan is way too much on the property. That's only 500,000. और अगर ऐसा है कि वाकई में 8,000 है, we can't do much. We can't do much. 8,000 पे हम इतना कभी इसको Airbnb कर दें, तब भी वो Airbnb 8,000 नहीं बनाएगी monthly. Plus taxes and insurance. Let me check real quick. Yeah, so $600 is taxes, right? That's even worse. खुद ने 332 का लिया था, फिर इसने 6 का लगा दिया, नहीं सेल हुआ. Yeah, so Heather, this is something wrong with this property. Definitely not a good buy at 500K. 2024 में एक साल पहले 24 के 12, right? तो एक साल पहले उसने almost 322 का लिया था. He's selling at 600,000 almost. So there's something wrong. Second position on this. Oh, it's a development project, I think. Potential. Need to see the location. I need to see the location.
Heather, location will kill us. Location will definitely kill us. It's a project in a very small town of 500,000. Tough one, Heather. This is gonna be tough one. Okay, so I would recommend moving on. It's not gonna worth it. 140 days in the market, and it's a construction project almost. आपके पास अच्छी खासी ज़मीन है, उस पर काम भी करना है. So I personally will say to move on. The other one that we just did a second position, much better property. Access in blah blah blah. Rapidly growing corridor. I think it's a land. That's not bad. Rapidly growing corridor following the access wall, building adjacent lot, airport 40 miles. Yeah, I don't. Again, this is also tough, man. 2.67 acres. I understand कि ये airport के करीब है. It could be a good land for. I think Atlanta से कितनी दूर था वो investor? No. Yeah, it's tough. I do have investor who invests in lands, but he's in St. Louis. It's going to be very far for him. I can check with him, but at this price also it's not going to make sense, right? जब भी वो उतने दिन से लगा हुआ भी है. One second. Okay. I think that was number 8 as well. Or it is this one. Yeah, there's this one. Oh, I forgot to read that. Okay, a part of a symbol includes. अगर आप चाहें तो आप इसकी लैंड ऑफर कर सकते हैं. लैंड इसका है डिसेंट, बट एट 400,000 इज नॉट गोना मेक सेंस. ठीक है, तो उससे या तो ख़ुद पूछ लें कि आपके पास अप्रेजल है जो गवर्नमेंट करती है, उस अप्रेजल का आप 30% 50% ऑफ दे दें, ऑफ ले लें. 30% नहीं, 50% ऑफ. ठीक है, उससे पूछ लेना कि आपका अप्रेजल है इस लैंड पे. ठीक है, लैंड का अप्रेजल लाजमी होता है, वरना प्राइस निकालना इसका बहुत मुश्किल होता है. तो आपका अप्रेजल आई थिंक फ़ौरन से मिल जाना चाहिए. ओके. Agent is asking to call to discuss. The agent have 4.8 million assumable loan at 3% rate, but will not want to be a lender, so they will consider a short-term bridge if needed. Me, I propose term. We would assume the existing loan. Okay, calculate at 1.2 minus the outstanding loan balance. We'd structure. Calculate at 1.2 down payment at closing. Equity difference. Remaining equity paid to you in monthly installments. नहीं, वो बोल रहे हैं ना आपको कि वो खुद होल्ड नहीं करेगा, तो वो मंथली इंस्टॉलमेंट की बात नहीं कर रहा है. बोल रहा है कि इनफ पेमेंट आप ला के दें. हाँ, जब भी उसने जो कॉल का बोला है ना, क्योंकि यहाँ पे इसने बोला ना कि वी विल नॉट बी एबल टू विल नॉट वांट टू बी अ लेंडर. ठीक है, तो यहाँ पे जो रिमेनिंग बैलेंस दिखा हुआ है ना, सॉरी, ड्रॉन फ्रॉम द इक्विटी, दैट्स गोना बी नो फॉर हिम. That's what he's saying. But I'll call us. Okay. Oh, it's a nice property. Uh, 30 units. Let's call. One second. किसका था एक्ट करेगा?
I want to confirm ARE just so we can run numbers on it. ओके एडगर का मैसेज आया कि बोल रहा है कि क्या पूछना चाहते हो। उसको तो बड़ा वॉइस नोट छोड़ा है बट उसको फिर भी अभी पूछना था। खैर इसको मैसेज कर दिया। ओके वेयर इज द एजेंट राइट हियर लेट्स कॉल। गाइस अगर आप मल्टी फैमिली पे ऑफ़र कर रहे हैं तो अगेन इसमें कोई आपको आपको देख के डरना नहीं है कि 14 मिलियन लिखा हुआ है इसमें मैं कैसे ऑफ़र करूँ। मैं तो सिर्फ 100,000 की ऑफ़र कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ 50,000 की ऑफ़र कर रहा हूँ। इट्स अ सेम प्रोसेस, बस ऊपर पैसे नहीं देते हैं हम। 626 688। Hello. Hi, is this Michael? Yes, it is. Who's this? This is Sayed Michael. You've been speaking to Heather Naki on the property at Treon Avenue. It's a multi-unit. Oh, Tyrone. Yeah. Yeah, Treon. Celeste. Yes. Yeah, so I just we were kind of running numbers back and forth, so I thought I'll give you a quick call to kind of discuss what sort of because I what I was told that you guys have assumable loan on this, correct? At That is 3%. correct. We have a Chase loan with, I believe, at least 18 months, maybe more, left on the loan before it Okay. jumps to variable. Okay. And do you know what would that be jumping to? Well, whatever market is at that Oh, time. it will go straight to the market. Okay, I see. Yeah. Okay. And and what is the price? I mean, asking price they're looking for. They're looking for more for like a sale, or they're okay if you were to consider assumable loan on some creative offers, or what do I you mean, have in mind? ultimately, it's going to be a sale. How you buy it is another question. Either you assume a loan or you get new financing or you buy all cash. Right. Right. So All cash would be pretty tough in this market, but what we are looking at is kind of doing an equity carry method on it, where we can bring enough down payment and carry the equity difference over a short period of time. Now, I need to run numbers on that 18 months, what is it's going to look like after. But I just want to confirm if that's something they'll be interested in. If I put together like a formal letter of intent yeah. on that. So the loan assumption is absolutely possible. There is a 1% assumption fee with Chase Bank, Okay. and um, that'll be paid by the buyer, and um, it's roughly $8.5 million. Right. The purchase price here is at like 14.5, I believe that's the number we last had it under contract at. Okay. And how's the situation of the property from inside? I mean, I haven't seen much pictures, but it looks pretty good. Yeah, no, it's a good property. It's a new construction building built in the 2020s. It's a couple years old, so I mean, seasoned tenants, rent roll is seasoned. So you do get vacancies here and there, but at this moment it's 100% occupied, and they do rent up here. These are larger units. You typically have families, who rent here. So yeah, no, it's a good property. How much down payment do you guys have? Well, we're looking to finance the down payment. That's what we're With thinking. who? With the private money lender. We work So with couple, so we will finance the down payment, which means that they will come into the first position, and Mr. Seller would be in second. so you're asking a seller to carry a second on the equity? Yeah, that's No, he's one not way going to do that. to kind of look at, but that's one of the offer I was thinking that we can put together and see and make sure how we can keep the seller safe, in the trust So and all that and stuff like that. Sorry, go how ahead. much down payment is a big question. How much money is he going to take out after the sale in his own pocket, like immediately?
Well, the thing is, his how much is the loan? Because we do have to bring in enough to cover that loan. So the loan is 8.5 million. Yeah. That's with So the Chase Bank with a favorable 3% something interest rate, sub 4 interest rate. yeah. That's eight and a So half million. yeah. So that's where we will thinking is that we have to bring enough down to cover that, so that we don't have to pay. Right. We So don't have to there's assume. there's 6 million left. So what are you gonna do with the 6 million? How are you gonna fund the 6 million? So that would be carried by the seller as an equity partner with us. Okay, but the seller doesn't want to do that. Okay. Okay. So the Yeah. only thing they're kind of interested in assumable or cash conventional. Yeah. So you would either put in 6 million cash and assume the loan. Right. If you have a debt fund that would want to take the equity, with the mez debt, like that's on you. You Mm-hmm. can figure that out. Right. But at the end of the day, what the owner is saying is, I wanted to basically sell the property, and he has an assumable loan, and he wants that paid off, and he wants to, cash out whatever equity is left for him. Sure. And if you don't mind me asking, what was the reason that it didn't, the contract fell through? Was it something with the property, just the financing? No, nothing with the property. It was the buyer who was trying to structure, in fact, something very similar to what you're proposing, a unique, creative financing with low leverage. High leverage, type of a scenario. I And see. the seller indulged it, and they came in at his price, and we tried it out, and his loan broker just couldn't pull through. I see. So financing fell through. And you said it's similar structure, so that means it probably wouldn't be a good idea to kind of try again. Yeah, he's not going to do it again. That's what I'm saying. Yeah. We've already been through that once Right. already. No, it makes sense. And it's just, yeah, you're not the only one. It's so interesting how I'm getting a lot of inquiries today. Not just it's you, someone else, and then this buyer that we just tried to do this with, Mm-hmm. trying to buy properties today with low down payment, low equity commitment, which I understand, right? If you're going to buy a property in today's market, you don't want to put as much money down, at least amount of risk as possible for yourself. So I get that. Mm-hmm. But no, I mean, a traditional multifamily deal, specifically here in LA, you're going to have to put minimum 35% down. Yeah, that's what we At usually minimum. get. And in terms of the Yeah. net operating income, that's the 2025, I'm assuming, the one on listed online, or is it? Yeah, so the NOI we have is so the way the owner operates his his P&Ls aren't clean because he has things in there he shouldn't be in there, but also his expenses are relatively lower as far as his recurring expenses. Right. So we baked in market rate expenses in our NOI is what we did. I see. We'll have financials to provide, but Right. again, it's not going to be clean. You're going to have to strip things away. That just doesn't make sense. Like Audible, I think he has like a car, or not a car, but some kind of extra, miscellaneous expenses that shouldn't be on there. Yeah, which makes sense. I mean, it's a part of the game. A lot of business owners do that to save a bit of Yes. the taxes. Yeah, sure. What I'll do is that I will run the numbers again. If they're not interested, we'll focus on the cash and conventional, and see what we can do in terms of down payment. I'll make some couple of phone calls and see what is the best down payment we can bring for this, and yeah, kind of put together an offer from there. Yeah, yeah. Tell me a bit more about you guys. What do you guys buy? Do you own anything right now? Do you own Yeah, anything so in California, in LA? What do you guys do? yeah, so basically we have been buying mainly through this method I mentioned. So on that we have a pretty strong portfolio. We bought a few hotels that converted into Airbnb and sort of thing. So we are looking into multifamily that we can potentially convert into Airbnb, number one, or kind of like a pet split, things of that nature. So this came across and we think it might be interested, but again, not with the similar method.
We have also bought a mall, converted into a storage units, sort of the similar strategy of the equity carry method. But yeah, I'll send you all the documents. That's not a problem, as long as we can make some numbers to work on this. Yeah, and if you're trying to Airbnb something like this, I don't think Yeah. I think it'll be very challenging. It's not the play for this Mm-hmm. property. Yeah. So usually we start with like one unit and see kind of what we are getting and then expand it. So we kind of test the market. We are not too we have a couple property not too far from here, so that's why we were kind of, you know, look into this Los Angeles. Do you have any properties locally? No, not necessarily locally. I don't own it personally. My partners that I'm working with, they own it. What do they own? I think they owned 14-unit apartment building. Where is it at? I'm not quite sure. Let me actually Google it. I think it's called Champston building. Is it in Los Angeles? Maybe outskirts, but I'm pretty sure it's around Los Angeles. Let me check. Yeah, I think it's no, it's not this one. It's something called Champstock. I just googled it. It came at Champstock building. I don't think that's the one. That's more than 14 years. But yeah, I mean, I can get the portfolio, because we will be buying together, so they're gonna be the main people. They know the market pretty well, a lot more than me. I'm more so in other cities, Houston and Texas. Are you one of the partners? Yes, yes. So it'd be you and one other partner? Yes, I mean they will be doing the primary financial due diligence. I'm more so accusation guy for them. You're the acquisition Yeah, for them. yeah, yeah. Acquire properties, run numbers, and kind of they audit the properties for us, and we go buy them. And you guys are trying to buy in Los Angeles, is what you're trying to do? Yes, we're trying to get into the market. We don't have much. I think the one that they have 14 units, that's more so outskirts, I believe. But yeah, we're looking to all over the place in Los Angeles, as long as numbers work, or if we're able to do the equity carry method, then we are able to buy left and right, honestly. But it's challenging because it's a new creative method. Not many seller has that trust or the knowledge, I guess, in some sense. So again, you have to educate the market and then buy it, right? So that's a lot of work. Educating is one thing, but the other thing is, sellers. In this situation, the seller needs their equity. They want their equity. They don't want to be a bank. They don't want to. Right. They don't want to carry over, their capital. So this is not a scenario. There's certain scenarios where it can make sense, but this isn't that. Sure. I will run the numbers and let you know. Do you happen to have any other properties listed that's kind of we can work and run numbers on in terms of the equity carry method? Not that I know of right now. Okay. So, I mean, the trade-off for a seller is to get their price, but if they don't get any, like, do you guys put any down payment? Are you trying to finance the equity carry over 100%? Because there's no point in the owner doing that. Well, it's not. Yeah, I guess we do almost do 100% of the down payment finance, but um, we have to make sure we are able to pay that back, right? And that's done by our portfolio. So the private money lender we take, they kind of use that as a leverage to give us enough down payment, right? Because they need a surety as well that if you're not coming at $0 from out of pocket, then they need a surety. So we do provide a portfolio to them, so they lend it against. What's the benefit to it? What's the benefit to the seller is what I'm trying to get at. Well, the benefit would be they don't have to sit on the market for a while. We can bring about 50% down payment.
we try to bring as much as down, so that they're not too worried about the equity, right? And then the rest of equity, we just make payments. The trade-off for us is that one, we don't have to put much down or at all, and we can make some cash flow, right? So we just focus on the cash flow for the most part. And if we have a strong cash flow, we know we're not going to default on the loan, and we have pretty sharp knife sort of underneath us. If we were to fall, let's say, two consecutive payment, if we miss two consecutive payment, the property goes back to the owner without any, let's say, foreclosure process. We create a trust, and then they kind of take a default ownership on that. But if you guys don't put any down payment down, right? Right. There's like, okay, he takes the property back, but he's back in the same place, and there's no there's no down payment for him to pay, to have. Well, like he will keep the down payment. If we default, he will keep the payments that we have made until then, and the down payment we have made. So essentially, he's winning a lottery in a sense. But of course, yes, go ahead. Yeah, but the payment you're paying him would essentially be the mortgage payment that he should be receiving. Like that goes without saying. But there's no, unless you're saying you're going to buy this property, you want to sell it and carry back 50%, and he gets, so if it's a $10 million deal, you want him to carry $5 million. You get $5 million somewhere else that pays him off. In his mind, he takes money off, chips off the table. So he's only got $5 million into this now, and he's carrying paper on it. So he's making whatever 8, 9%, 10% on his money in the meantime. Okay, that's fine, right? Like that's a scenario that I think sellers would consider. And you guys operate the building, you take the cash flow, you do whatever you want with it, and he just gets his 10% or whatever percent he gets. Yeah, that's how it is. That's really how it is. The rest of the 5 million, he will hold the paper on it, and we kind of lend against that. So now we are making him a payment, and we are paying the bank that we are lending the money against it, right? And then we're paying two payments. So one goes to the bank with the interest rate, whatever, and one goes to the seller with whatever the interest rate. And in the middle, we're able to make a bit of a cash flow, right? And again, even if you're making, let's say, I don't know, $100, it's kind of like an infinite cash flow because we didn't put a lot of money down or any, right? So it helps us acquire the asset, run the asset, and manage the asset, along with, not putting any much money down. And we can do this strategy for multiple buildings at the same time. Yeah. So, and then that's the next question for an owner is if he's okay with that being in a second position, because if you're going to get a bank loan, they always want to be in first position. Yeah. Right. So that's the other consideration. Yeah. So this is the hurdle that we faces with a lot of the sellers, and that's how we overtake it. We're like, okay, well, we have a sharp knife that two consecutive payments, it goes back to you, or we are in a trust, no foreclosure process, none of that. It's already mentioned in the contract. So that sort of thing we do so that they are safe in lending the money, and not to. Plus, we come at asking too. So even though we might take 6-7 years to pay the money back, but we will give the money that they're asking. Yeah. So in any event, this scenario wouldn't apply to that. Right. But let me know what you're able to do. The loan can be assumed roughly $8.5 million. And if you can come up with the other down payments on your end, feel free to call me back. Sure, we'll run some numbers and we'll get back to you. All right, sounds good. Thank you so much. No worries. Okay, Talk bye-bye. soon. Bye. Yeah, Heather, this would be tough. I think basically move on, number one, or number two would be just follow up, because he's been in the market for a while. They went under contract with the similar method that we did. इसका मतलब है कि वो हो सकता है दोबारा ना ले, right? I think probably move on or keep him as a follow up. But
I feel like he understand the concept of the second position. तो आप ये कर सकते हो कि उसको वापस ईमेल करो, उसको बोलो कि I checked the property, the numbers are not going to work for second position, but can you find me more properties in Los Angeles that I can use this method. तो technically फिर वो आपके लिए काम करेगा, and then we'll go from there. But yeah, in terms of the price, the net operating, again the issue is also the net operating income. वो बोल रहा है कि इसमें proper number नहीं है, proper पैसे नहीं है इसके, तो जब इन्होंने शायद MOQ लगाया भी नहीं है, right? तो और loan assumable जो उसका है वो आपका only 18 months का है, ठीक है? 18 months के बाद आपको दोबारा आप नॉर्मल लोन पे चले जाएंगे, राइट? लोन assumable, इट्स नॉट गोना मेक सेंस। प्लस हमको 6 मिलियन डाउन पेमेंट ला के देनी है सेलर को, ओके? 18 सेकंड सेलर इज ओनली सेल्फ फंड पोजीशन। क्या उससे पूछें कि भाई कैसे एग्जिट कैसे हूँ मैं, ठीक है? आज से पूछें कि अगर वो बोलता है कि सिर्फ 1 साल करता हूँ, 2 साल करता हूँ, 3 साल करता हूँ, 4 साल करता हूँ, तो उससे पूछें कि भाई ठीक है मैं अंडरस्टैंड करता हूँ और मैं करना नहीं चाह रहा सेल्फ फाइनेंस, बट मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मेरा एग्जिट क्या होगा इसमें, ठीक है? So can we do the second position? So, yes, देखें again, guys, please remember, there is no issue with the numbers, ठीक है? There's an issue with convincing, ठीक है? Negotiation का issue आता है। 7 मिलियन की प्रॉपर्टी है, 10 मिलियन की, डज नॉट मैटर, ठीक है? क्योंकि मैं अपनी जेब से पैसे नहीं निकाला, मैं एक बैंक से लोन लेके आ रहा हूँ, राइट? So we don't have a problem no matter what it is. Can we do other than second position? Yeah, we can do first position. 10% down, 10% down in the whole portfolio as long as it's cash flow. Okay, as long as cash flow. All right, guys, I'll move on to the next person. I know I've spent a little bit of a time. Actually, I spent 1 full hour. Okay, let me check the other DMs. I think who said it next? Guys, actually, I'm gonna hold on to your DMs for a second. Adil, I will check your DMs. उसके बाद फिर मैं hold on करूँगा 2 मिनट के लिए, because I need to talk about some things important. So, did you call the Ace for Khan in this number? I will not live. I will not in live after 10. I think the seller is reduced the price because I'm not sure which property is Ace is one, but जो भी आपने, I think आपका एक POF का मसला था, right? Or that was Hassan, I think, someone else. I think we did call Ace, I'm pretty sure. Abdullah, send me the address. I have no idea which address the property is. I have to look it up to understand. Please send me the address. Guys, I'm going to take a couple in the next 10-15 minutes just to check couple things. Couple people mentioned that they submit a deal, but we didn't get back to you. I know Fahim has few property, so that's, I know. Ayman has one deal. Who else? I think Aisha has one deal. Aisha, are you here? I think you submitted one. Let me check. Hassan Tahir deal was there. Eric Johnson ki deal thi. Whose deal is this one? I need to check this one. Guys, इसमें मेरे ख्याल से ये आयशा की है और Aish. आपका नाम है? Aisha, is this yours that you submitted? Is Aisha here? I think I remember it was Aisha's, but I'm not sure if it's someone else's deal as well. So I'm saying I didn't submit any property. Who's Aisha then? Or Aish? 1 second. Right here, I was checking. Right here. Aish store, maybe it's someone else. I'm not sure इसका, क्योंकि I feel like इस पे someone else were already talking to it, and
But I guess Fahim is saying that it was his. Okay, Abdullah, I'll check your there. Yeah, I mean, इस deal पे जो deal है, I don't know किसकी है. Somebody named Ish, but I cannot find him here. But anyways, they're saying they got a discount pretty good. But when we call them, agent is saying no, I haven't talked to this person at all. This is the issue, guys. Please make sure कि अगर आप लोग प्रॉपर्टी सबमिट करा रहे हैं तो रियल करा रहे हो, फेक ना हो. ठीक है. It hurts our credibility hurt होती है, and it becomes an issue for us. Yes, Abdullah, I'll check your address. I think Ayman said that somebody told me that. Hey, what was the student you mentioned that said that she submit or he submit the property and we didn't get? Okay, let's see this one. Abdullah, I'm just looking at your property. It's Khan. I think we called on this one. Yeah, I'm pretty darn sure we called this one. I think उसने या तो पिक नहीं किया था या क्या मसला हुआ था. Let me see. मेरे ख्याल से इस पे हमने बात भी की है. 3704. Can't find it for some reason. So did you call this one? Yeah, I think we called on this one, but let me call him again. आपने इसको अब्दुल्ला कितनी की ऑफर दी थी? 69,300. Right, 69 is 70,000 अंदर 70,000 का है और घर की शक्ल सूरत ठीक है तो ठीक ऑफर है. We can work with this offer. मैं इसको तो दोबारा कॉल करता हूँ. लेट्स सी कि वो पिकअप कर ले इस बार. Thank you for calling AceCon with the AceCon team, powered by Levin Ridgey Realty. I'm sorry that I missed your call, but your call is super important to me, so please leave me a voicemail or send me a text for a faster response, and I will get back to you as soon as possible. Thank you so much again for your call, and I hope to talk to you soon. Have an awesome day. Hey, yes, hope you're doing well. This is Syed. You've been speaking to Adil on the property at Lloyd Street. We're running some number. I think we're good with the offer that we have sent at the 63,000 or somewhere around that. I just wanted to give you a quick call and kind of see what's the situation of the roof. I tried Google Earth. Looks like it might need some work. Yeah, so I just want to give you a call and kind of run the numbers and see where we goes. I will also send you a quick message, and Adil will follow up with you shortly on that. Talk soon. Bye for now. Yeah, Adil, इसने कल भी नहीं उठाई थी, basically offer phone. But I'll save his number so when he call, I'll let him know what's going on. Okay. Hey Ace, hope you're doing well. Just left you a quick voice note on the property at Lloyd Street.
It's a cool name, Ace. Okay. Right. Let's go back to Discord. I think it was Eamon. They said. Eamon, did you apply something or did you submit an offer and it wasn't submitted? What really happened? Because from my understanding, we only have one property that you submitted that we are working on contract of set. सर आज जो डील है आपको दिखाई थी क्या वो अब सबमिट कर सकता हूँ एज नेम लेस्ली उससे कॉल पर बात करी थी हुसैन आई एम नॉट श्योर मैन आपको मुझे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ देख रहे होते हैं तो यू हैव टू सेंड मी समथिंग ओके आप मुझे एड्रेस भेजेंगे तो मुझे समझ आएगा मुझे वैसे नहीं समझ आएगा फ़हीम आपने जो अभी मैंने अभी एक प्रॉपर्टी खोली थी जिस पे आपने बताया कि आपकी प्रॉपर्टी है उस पे आपने कहाँ तक पहुँचे थे इन टर्म्स ऑफ प्राइस where did we get there yeah he would is sorry Abdullah I understand कि वो reduce करेगा हैदर द थिंग इज़ अगर आप सबमिट करेंगे ना तो होता ये कि वो लोग रन करके या तो रिजेक्ट कर देंगे या अप्रूव कर देंगे अप्रूव कर देंगे तो मुझे बता देंगे रिजेक्ट कर देंगे तो वी जस्ट मूव ऑन बट अगर आप नहीं सबमिट करते यहाँ लेके आते हैं तो वी कैन डिस्कस आई कैन एक्सप्लेन कि क्यों मना हो रहा है या नहीं मना हो रहा राइट दैट्स अ होल थिंग व्हाई इज इट 18 days I was waiting for even मैंने कहा था कि प्रूफ ऑफ ज़रूरी है मैंने कहा था कि 3 दिन तक सेंड हो जाएगा मैंने उसे कहा था कि 3 दिन तक सेंड हो जाएगा ये एमन ये वो प्रॉपर्टी जिसके आपने मुझे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे थे या वो डिफरेंट प्रॉपर्टी थी कुछ सिस्टम में सिर्फ एक ही या आपने मुझे ज़बान ही बोला था आई डोंट नो बिकॉज सिस्टम में सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है जो आपकी जो उसकी थी सेट वाली की ओके ये लिंक है प्रॉपर्टी का एम हुसैन हुसैन ये कितने की हमने बात करी थी इस पर Where is the price history here? No history at all. Okay. 87. Yeah, 87 at 87 is good. अब मैंने इसको कॉल की थी बट क्या इसने पिक कर ली थी या नहीं की थी दैट्स अ इशू बट अगर 87 पे आपका कंफर्म है और इट्स अ रियल देन या सेंड इट इस पर डेफिनेटली काम होगा तकरीबन 30,000 से ऊपर का 40,000 तक का I submitted it also mentioned that the POF needs to be sent for this. Okay, well, I'll check this property myself because I spoke to the team when you commented, I think, somewhere in the group. They told me, like, there's nothing they can see. Yeah, guys, just make sure, देखें आप जब हैशटैग सबमिट में प्रॉपर्टी सबमिट कर रहे होते हैं ना और अगर रियल नहीं है ठीक है तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर मी हमारी क्रेडिबिलिटी ख़राब होती है जिस एजेंट से आप बात कर रहे हैं उससे आपकी रील ख़राब होगी ठीक है तो मेक श्योर करें कि आप रियल कर रहे हैं क्योंकि जब हम उसको कॉल करते हैं वो बोलता है कि हाँ इस प्रॉपर्टी का हूँ मैं ये है ठीक है कॉन्टैक्ट करते कि एजेंट का बोल रहा है नहीं ऐसी किसी से बात नहीं हो रहा हमने ईमेल दी उसको बोल रहा नहीं इसके बंदे से मेरी बात ही नहीं हुई सो इधर के आप किसी और की प्रॉपर्टी सबमिट करा रहे हैं या आपने गलत नाम दिया है हमें या आपने ईमेल गलत दी है आई डोंट नो दैट्स व्हाई आई सेड ऑन दैट
I know for the Fahim's property, yes, they're all set. And these two property from Eric Johnson. I'm not sure who's Eric Johnson in our community. जिसने 3 डील ऑफर 3 प्रॉपर्टीज सबमिट कराई हैं, तीनों में सेम ही इशू है. बट एरिक जॉनसन, एंड आई डोंट नो हुज एरिक जॉनसन ना. मैं कैसे अपडेट दूँ किसी को एरिक जॉनसन को, राइट? But I'll check few DMs and then we'll end the class, guys, because I have to leave today because I'm not at home right now. Okay, so please hashtag submit आप उससे पहले क्लास में लेके आ जाएं, ठीक है? या अगर आपको एटलीस्ट 30% ऑफ चाहिए होगा प्रॉपर्टी पे, ठीक है? अगर ये प्रॉपर्टी है, इस पे मुझे 30% ऑफ मिल जाए तो मुझे कंफर्म पता है कि कितना भी रेंट हो, इसका कैश ऑन कैश अच्छा हो जाएगा, ठीक है? और ये डील खुद से अच्छी हो जाएगी, ठीक है? डिस्काउंट हो गया और कैश ऑन कैश अच्छा हो गया. बट अगर आप 30% नहीं ला पा रहे, देन इट्स नॉट गोना बी डील मोस्ट लाइकली, ठीक है? 30 के क्लोज हैं, 1-2,000 का फ़र्क है, कोई मसला नहीं, ठीक है? बट अगर आप 10,000 ऑफ हैं, 8,000 ऑफ हैं, 15,000 ऑफ हैं, दैट्स अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है? सो प्लीज़ मेक श्योर 2 क्राइटेरिया. 1 दैट प्रॉपर्टी इज़ 30% ऑफ, ठीक है, जिसमें काम ना हो. एंड 2 सेकंड क्राइटेरिया, उसका कैश ऑन कैश अच्छा हो, राइट? बट उसकी भी आपको ज़रूरत नहीं है. अगर आप प्रॉपर्टी पे डिस्काउंट लेके आ गए और वो कोई गधा सेलर नहीं है जो जानबूझ के अपनी प्रॉपर्टी की प्राइस को इन्फ्लेट किया हुआ है, this is a deal, okay? Look at Fahim's deal. Fahim's most of the deals are discount plus they have a good cash and cash, right? We talked about Heather's deal today as well, the first one, Detroit, good cash and cash, right? But please make sure कि आप डिस्काउंट और लेके आएंगे तभी कैश एंड कैश अच्छा होता है. अगर आप एड आस्किंग पे आ रहे हैं या एड आस्किंग से 100 की प्रॉपर्टी है, आप उसको 80 में लेके आ रहे हैं. वी हैव अ प्रॉपर्टी, somebody gave us the hashtag submit. It's $110,000 and he got it for I think $95,000, right? $110,000 की प्रॉपर्टी है और हमें डिस्काउंट मिला, हम आए हैं 95 का. दिस इज़ नॉट अ डिस्काउंट गाइस. ये डिस्काउंट, ये वही प्रॉपर्टी मैं इन्वेस्टर के पास नहीं लेके जा सकता और उसको नहीं बोल सकता कि भाई मैं लेके आया हूँ प्रॉपर्टी सिर्फ नॉट इवन 10%, 8% ऑफ. वो बोलेगा भाई ये तो मैं खुद ले लेता हूँ, अगर मुझे लेना होता ये प्रॉपर्टी तो ये तो मैं खुद ले लूँगा, मुझे आपको कमीशन की पे और इतने सारी चीज़ों करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? और वो एक नहीं, सारे इन्वेस्टर नहीं देंगे, राइट? आपको एट प्राइस से डिस्काउंट 30% लाजमी है. अगर क्लोज आते हैं तो ठीक है, बट ऐसा नहीं हो कि आप 10% दे रहे हैं, 11% सबमिट करा रहे हैं. आप कराने में तो करा सकते हैं, बट अगेन इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, राइट, फॉर अस एंड यू गाइज. एंड मैं आपको एजुकेट भी नहीं कर पाऊँगा. अगर आप लेके आए क्लास में, आप बोलें कि मुझे सिर्फ 10% डिस्काउंट मिला है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, एजुकेट कर दूंगा, राइट? Okay, let's have a look at some of the properties received. I think the low payment will be an issue. There's a mortgage on this property. Payments need to be at 110. एक तो इन लोगों को बताओ कि पूरी ऑफर दो, उसके बाद जाके ये मॉर्गेज की पेमेंट की बात करते हैं. या उससे आप हुसैन, मेरे ख्याल से सिर्फ ये रह गया कि आप उससे इंटरेस्ट का पूछ लें और फिर $110,000 को आपने $1,100 को आपने कवर करना लाजमी होगा. क्या क्या उसे पूछना? आपने उससे उसका वो पूछना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट. ये मॉर्गेज टेक ओवर डील होगी, इंटरेस्ट रेट और मंथली पेमेंट. मंथली पेमेंट तो मुझे दिख रही है यहाँ पे, बट इंटरेस्ट रेट का आप पूछ लें एक दफ़ा. सही. और आपको इतनी पेमेंट लाजमी लानी पड़ेगी, ठीक है? तो अब कैश फ्लो आपका नेगेटिव जाएगा या मे बी 5% बनेगा, दैट्स ओके, ठीक है? कैश फ्लो इसका गिरेगा, बट दैट्स ओके, बट इट्स अ मॉर्गेज टेक ओवर नाउ. सही. मैं उसे घर का इंटरेस्ट पूछता हूँ. अगर इंटरेस्ट देखें, अगर अच्छा इंटरेस्ट है देन
100% a deal without even के at 1100 से deal, ठीक है। मगर अगर इंटरेस्ट रेट वही नॉर्मल है जो कि 6, 7, 8% है, then we have to figure something out. अच्छा, इंटरेस्ट कितना परसेंट होगा? I don't know. अगर उसका मार्केट इंटरेस्ट है तो मार्केट का अभी इंटरेस्ट चल रहा है 7.8 से 6%, बट उसका अगर लेट्स से 3-4% है, so that's a good interest rate. सही। ठीक है, बट अगर इंटरेस्ट रेट नहीं भी सही है तो that's okay, we can figure something out. सही है। और आपने नीचे कंपेरेबल्स भेजे उसके? हाँ, ये घर असल में अभी मैंने देखा, ये पेंडिंग में है। हाँ, ये वाला पेंडिंग में लग रहा है। आई थिंक दे आर अंडर कॉन्ट्रैक्ट। नहीं, वो दूसरा वाला। हाँ, मैं उसको लेकिन इसकी काफी जबरदस्त कंपेरेबल्स हैं। तब ये 55 पे लिस्टेड है, इसके कंपेरेबल 180, 2 लाख, 210, 220 ओह वेरी नाइस। इस तरह जा रहे थे। लेट्स कॉल हिम। अगर आपको कंफर्म है पता, मैं कर नहीं रहा कंपेरेबल्स, मैं आपके ले रहा हूँ, बट आई कैन कॉल हिम। एक नजर चेक कर लें आप। यार मेरे पास टाइम नहीं है, वरना मैं कर लेता। मैं इसको कॉल करके बात कर लेते हैं, फिर आप एक दफ़ा दोबारा चेक कर लेना, या तो कल चेक कर लेते हैं उसको, ठीक है। क्योंकि अगर अंडर कॉन्ट्रैक्ट है तो उसको कॉल पे बात कर लेते हैं, वरना हाथ से भी निकल सकता है ये। अगर कॉन्ट्रैक्ट इसका खराब हुआ तो फिर वो हमें कांटेक्ट कर लें। Telephone number 586. Let's call again. Telephone number 586-8053785 can't take your call now. At the tone, please record your message. When you've finished recording, simply hang up or press pound for further options. Hey Jessna, this is Syed. I'm looking at one of your property at Devonshire Road. I believe you've been speaking to Anna on it, and we were running numbers. It looks like it's under contract, but I just wanted to send you kind of like a backup offer just in case they back out. We're really interested in this one. I'll shoot you a quick text as well, and I'll have Anna reach out to you on this property to kind of see where the status, what the status is at on the contract on this property. Talk soon. Bye for now. या हुसैन, आप उसको फॉलो अप कर लें, बस उसको बोल के हमने मैसेज छोड़ दिया, वी आर वेरी इंटरेस्टेड, टेक आवर बैकअप ऑफर। और इसको कितना ऑफर करूं कैश ऑफर? देखिए, डिस्काउंट तो हमें लेना है। अगर आप इसको 30% भी ऑफ लेके आ रहे हैं, दैट्स गुड। अगर इसके वाकई में कंपेरेबल 150 160 से ऊपर है, आई थिंक इट वुड बी अ गुड डील, ठीक है। अगर हम 50,000, हाँ, अगर हम 50,000 भी लगाते हैं, विच आई डोंट थिंक इज गोना बी दैट मच वर्क बिकॉज ये ब्रिक है। अगर 50,000 भी लगाते हैं, बहुत ख़राब घर है अंदर से, तो हम 100 पे पहुँचेंगे, राइट। तब भी हमारा वो हमारे पास फिर भी 60,000 पड़े रहेंगे, यू नो। सी मैं 45 से स्टार्ट लेता हूँ और आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं कि किस के बाद बनती है। 45,000 से हाँ, वो कितना बन रहा है? 70%, 30%? नहीं 30% तो मेरे ख्याल से 35 बनेगा। हाँ, 48, 35 बनेगा। 40, 42, हाँ 42 बनेगा। या आप 42 से स्टार्ट करें, और उसको तकरीबन 10,000 के भी अगर हमको बेनिफिट मिल जाता है, दैट्स गुड। सही है।
और कल आपने एमी को कॉल की थी, उसने कहा कि मैं बिजी थी, तो फिर आपने उसके साथ कांटेक्ट किया था, उसने कॉल की थी आपको दोबारा? किसको दोबारा बोलेगा? एमी को? एमी, हाँ, वो मैंने आपको कंपेरेबल भेज दिया। नहीं, सिर्फ सैत का आया है और आपने उसको कॉल की थी, उसने आपको रिप्लाई दिया था डायरेक्ट कि मैं बिजी थी। no, I just got yeah, I have nothing else on it. अगर टाइम हो आपके पास तो दोबारा कॉल कर लें। Sure, I can call. Send me the address. आप मुझे टैग कर दें दोबारा उस चैट में ताकि मैं देख लेता हूँ. Heather, I'm just gonna send you a screenshot. It's just a lead that I'm working on. Just follow up on this. मैं आपको सेंड कर दिया। Okay, sounds good. I'll check. नीचे कंपेरेबल से वो 55 का कह रही है और हम 40 का कह रहे थे, लेकिन आपने जब कंपेरेबल चेक किया आपने कहा कि इसको 48, 49, 50 तक का कर दिया है, तो कैसा होगा? Yeah, I remember. Okay. एमी, Hello? Hi, is this Emmy? No, sorry. Not the listing agent of the property? Okay, maybe wrong No, number. sorry. No Have a worries. nice day. Okay, bye. What is this? Is this the number? Is this Hussein? Is this the number, right? यस, हाँ यही एमी है ना। उसका कोई प्राइवेट नंबर नहीं है? ये तो बोल रही है नो सॉरी. आपके साथ सेव है। हाँ सेव तो आ रहा है वो, बट नया क्यों आ रहा है ये? 7. Yeah, Detroit Pacific Street. Yeah, it's the same one. Hi, this is Amy Dunlap with the Amy Dunlap team policy. For a quicker response, send me a text message or leave me a voicemail message and I will get back with you as soon as possible. Thank you and have a great rest of the day. I'm not gonna leave a message because I'm kind of worried what just happened. एक बोल रहा है एमी नहीं है, दूसरे का वॉइस मेल, उसी पे वॉइस मेल जा रहा है एमी. I'll text her. Hey Amy, hope you're doing well. Just wanted to check in on the property at the Pacific Street. I just wanted to know what's the status on that. I tried to call you yesterday but wasn't able to get a hold of you. Looking forward to your chat. Talk soon. Bye for now. Okay, I sent him a voice note. Okay, yeah, Hussein,
I'm not sure what just happened, but इसको follow up रखते हैं. कोई मैसेज आता है तो मैं आपको बताता हूँ उसका, ठीक है? सही है, मैं उसको मैसेज करता हूँ कि हाँ, उसको ईमेल कर लें. कॉल किए आई डोंट नो कि अटेंड नहीं कर। क्या जा रहा है मसला. जी, और टेरी को मैंने मैसेज किया था कि वो मुझे मेंशन नहीं कर रहा। टेरी आपको नहीं कर रही? हाँ, टेरी को मैंने 2-3 दफा पूछा कि टेरी की ईमेल अभी आपने भेजी तो है मुझे. जी ये टेरी की तो पिक्चर भेजी है आपने. हाँ, ये आपने कहा ना कि इंटरेस्ट पूछ लिया, मैंने पूछा है इसका इंटरेस्ट, लेकिन वो मेंशन नहीं कर रही। चलो मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ, हाँ, आप देखते उससे हैं। इंटरेस्ट का पूछ लें. उससे पूछ लें कि वी कैन डू द मॉर्गेज टेक ओवर इफ यू कैन लेट मी नो द इंटरेस्ट. ओके, सही है, थैंक यू. थैंक यू। No worries. Guys, anyone else is missing their deal? I want to make sure कि your deals are not missed because आप लोगों की deal पे हमारे पैसे भी लगते हैं and then if my team is doing something wrong, I need to know. Okay. Heather, there is no address. I sent you the lead. You have to follow up on that. He is a friend of an agent that was working with me for a while. ठीक है, उसकी कोई प्रॉपर्टी है तो उसने मुझे बोला था मैं मैसेज करूँगा एक रॉन्ग नंबर से, तो प्लीज़ उसको हेल्प कर दें. तो ही नीड्स टू सेल हिज प्रॉपर्टी. आई सेंड यू द ईमेल. आप उसको ईमेल करके कंफर्म कर लें. मैं उसको आपको बता दूंगा कि मैंने आई सेंट एक्यूजेशन मैनेजर ऑन इट. ठीक है. लेट्स सी. आपने मेरे मिस किया. यस, आई कैन चेक फहीम्स डीएम. Fahim, all I know is they are working everything they are my team is working on is all your deal apparently, yours and Eamon's. Nothing else is in the pipeline, so that's why I was confused. Okay, did we miss anything or not? Anyways, Fahim, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? Can you hear me? जी, आपकी आवाज आ रही है। Perfect. इसका आपका एजेंट बोल रहा है कि 115 से 120 हज़ार कंपेरेबल्स हैं इसके, जी, और कल हमने 45 उससे पूछा तक. था, 45 हमारा इस पे था, उसने 55 का था। अंदर से हमें अंदर से कुछ नहीं पता ना पिक्चर्स वगैरह का. हाँ हाँ, जी जी, अंदर से कुछ नहीं पता। नहीं तो अगर देखें अभी जैसे हुसैन की हम बात कर रहे थे, हुसैन की जिस भी बात कर रहे थे कि अगर आप बहुत ज़्यादा काम लगा के चलते हैं, जो कि इस स्टेज पे हमें लगाना पड़ेगा लेट्स से 50,000. ठीक है. और हमारे पास हमें प्रॉपर्टी मिलती है एट ए 50,000, दैट्स 100,000 ऑलरेडी. ठीक है. जी एंड इट्स अ टफ. ठीक है. और ARV अगर 115 120 है, दैट्स इट्स अ टफ. तो हम दैट्स व्हाई वी हैव टू स्टिक विद 45. वो भी इस वजह से कि फिलिपिन की तो एक डिफरेंट चीज़ है, बट हमें अच्छा खासा डिस्काउंट मिल गया है. राइट, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि वी कैन रिस्क इट. अनलेस एजेंट बोले कि नहीं 50,000 का काम नहीं है, इसमें सिर्फ 30,000 का काम है या 20,000 का काम है, तो ठीक है, फिर आप मुझे इमेजेस प्रोवाइड कर दो एंड देन वी कैन रन द नंबर्स. ठीक है. तो ये दो चीज़ें आप उससे ज़रूर पूछ लें. ठीक है। बाकी कंपैरिजन का तो समझ गया कि 115 के इतने ख़ास नहीं है. Ask to take over the mortgage or applies under. अच्छा, इससे बात करनी चाहिए ना, पहले भी मैंने हमको ये लेके था कि इसकी 3 प्रॉपर्टीज हैं, वो सब 2 पे बात करी थी, लेकिन हमारी इससे बात नहीं हो सकती है ना। कल भी आपने शायद की थी, लेकिन उसने उठाया नहीं। इसको बस प्रॉपर्टी बेचनी है, तीनों पे सब 2 पे एग्री करिए. हमें आई गेस डाउन पेमेंट फिगर आउट करनी है. डाउन पेमेंट भी हमें इसको नहीं देनी, यानी कि सिर्फ हमें सब पे वो क्लोजिंग पे कुछ मांग रहे हैं बस। मतलब एजेंट कमीशन, क्लोजिंग कॉस्ट वगैरह. जी जी। Okay, I'll call. Yeah, it could be a good. Give me one quick second. Let me. 1 second. 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 1 second
Hi, thank you so much for calling Elaine Simon with Dogwood Realty. I'm so sorry that I missed your call, but if you leave me your name and number, I will get back to you just as soon as I can. Thank you and have a great day. Hey Aline, hope you're doing well. This is Sayed. You've been speaking to Fahim on the property at 16th Street. We were just running some numbers on the subject to or sort of the mortgage takeover possibility on it. Looks like it's right up our alley. We have done few deals like that. I'll send you the portfolio. I would be very interested in picking up the other two offer properties as well along with this. Let me know if you can shoot me a quick text. We'll go on a quick chat and I can discuss this further. Or you can speak to Fahim as well. He's the primary accusation guy on the mortgage takeover or subject to deals. Yeah, that's all for now. We'll talk to you soon. I'll shoot you a quick text as well. Bye. No, वो फोन नहीं उठा रही अभी भी. ये मेल पर भी बहुत लेट रिप्लाई करती है, 2-3 दिन बाद फोन में नहीं उठाती. Let's see. But yeah, देखिए अब हुआ ये कि ये बंदा लगा रहा मार्केट पे पैसे कम कर नहीं सकता क्योंकि मॉर्गेज है. ठीक है, 180 दिन तक लगा रहा. फिर उसको समझ आ गया कि भाई ओनली रीज़न फॉर मी टू सेल इज मॉर्गेज टेक ओवर और सब्जेक्ट टू. दैट्स द ओनली थिंग वी कैन डू हियर. सो इट्स अ गुड डील. सेलर को रियलाइज़ हो गया और हम एग्जैक्टली उस टाइम पे खड़े हुए जिस टाइम पे सेलर को रियलाइज़ हुआ है. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी नीड. बाकी इसको आप नहीं छोड़ें. बाकी जो आपकी प्रॉपर्टीज है वो तो हैं अच्छी सही है, बट इसको नहीं करें. और इससे जैक्सनविल की और जो 3 बोल रहे हैं आप उसकी भी बात करें साथ में. वो तीनों की तो इसने कर दी है ना, ये यानी ये 3 का तो वो एग्री है. इसके अलावा इसने 2 और दी है. ये टोटल 5 है इसकी है. इसकी टोटल 5 है तो 3 के अलावा भी 2 हैं और सारी 3 के सब्जेक्ट अलावा 2 भी हैं. 2 सब के ऊपर है तमाम. परफेक्ट. इसको पकड़ लें. मेरे ख्याल में ये एजेंट या तो ये लेती हुई प्रॉपर्टी है जिस पे मॉर्गेज है, या इसको सब्जेक्ट टू इतना अच्छा आता है कि ये सेलर से खुद ही कन्विंस करा के कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है कि भाई सब्जेक्ट टू पे ही बिकेगी आपकी प्रॉपर्टी, क्योंकि इस मार्केट में आपको जितना डिस्काउंट मिलेगा आपको जेब से पैसे डालने होंगे. सो वेरी गुड. आई लाइक द सब्जेक्ट टू प्रॉपर्टीज़ आर क्रिएटिव प्रॉपर्टीज़. और क्रिएटिव डील बहुत जल्दी सेल होती है कैश से. ठीक है. सो दैट्स वेरी गुड. बट प्लीज़ मेक श्योर टू फॉलो अप. इसका आप नेम सेव कर लें, इसको स्टार कर लें या फिर बुक मार्क कर लें, जो भी आप कर सकते हैं कि हम इसको लूज़ ना करें इस एजेंट को. स्टार किया हुआ है. परफेक्ट. उसको मैं फॉलो अप करता हूं. दैट्स परफेक्ट. इसमें हमने 272 और 27 की पेमेंट दी है. 155. जी. या आई थिंक दिस इज़ गुड. इट कुड बी सेल ऑफ फाइनेंस. अगेन शक्ल से बहुत अच्छा नहीं है, बट it's a perfect for living. रेंटिंग के लिए यही चीज़ें चाहिए होती हैं, nothing else. So that's good. इसका स्टेटस आपने बोला है कि कॉल जॉर्ज, राइट? एनीथिंग एल्स? उसने एक्सेप्ट की है नहीं करी नहीं पता भी. नहीं सर, ये हमने इसको ऑफर देगी तो उसने कॉल करेंगे. Okay, I'll call. Please leave your message for 90443. Let's call him again. Nobody's picking up today. I'm not sure why. I think इस पे mortgage है. इस पे mortgage है and then he's asking a lot of the price. But that's okay.
Please leave your message for 90443409229. Sorry. Box is full. To send an SMS notification. ओके उसका मेल बॉक्स भी फुल है बट फ़हीम आई थिंक उसको बोल दिएगा मेरे 2 मिस कॉल करिए XYZ और उसको ये बता दिएगा कि इट्स गोना बी अ मॉर्गेज टेक ओवर फ़हीम एक्चुअली बिकॉज उसका लोन है तो हमें लोन चेक करना है। आप उसका लोन से बात कर लें, इंटरेस्ट रेट बात कर लें और उसको बता दें कि मैंने कॉल की थी, आपने उठाई नहीं, मैं आपको कल फिर कॉल करूँगा इस टाइम पे, ठीक है? ठीक बट मॉर्गेज ठीक टेक ओवर आपने एक और अभी भी भेजी है, मैं चेक कर लेता हूँ। जी जी 5988 reply. Many thanks for the patient. I appreciate that very much. My client said he will take 37,000 plus the closing cost. He said that if you are here, you will see the potential we have in the deal as soon as possible. It's a full rehab, but it's in a nice area. Yeah, I mean, ठीक है, full rehab है, that's okay. That's not a problem. Detroit is also not a problem. ठीक है। अगेन फ़हीम इसमें ARV निकालनी पड़ेगी, आप ख़ुद निकाल लो, आपको अंदाज़ा हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर एजेंट से कंफर्म करा लो, ठीक है, नेक्स्ट ईमेल करने से पहले। तो 37 अभी 37 हो गया है तो अभी हम उसको क्या जवाब दें फिलहाल? देखिए उससे पूछें कि भाई 37 ठीक है, अगर मैं 37 लेता हूँ तो मुझे आप आफ्टर रिपेयर वैल्यू बताएं, राइट? तो फिर आफ्टर रिपेयर वैल्यू आ गई 37, तो हमें एंट्री कॉस्ट पता चल जाएगी कितनी है, देन वी कैन गो फ्रॉम देयर। ठीक है ठीक है, ठीक है राइट, नो वरीज, गो टू नेक्स्ट पर्सन। भाई मुझे बताओ हडल तारा लाइव दिखाओ। उस्मान उस पे आप देख सकते हैं हडल पे और टिकटॉक लाइव, यूट्यूब लाइव पे। सिर्फ एक चीज़ और है, जी वो जो 2 प्रॉपर्टी थी ना, एक मैंने आपसे पहले बताया था वो कहती थी 15 से 20 दिन में मैं क्लोज करने, जो मैंने सबमिट कराई है ऑलरेडी, जी जी। वो उस पे हो सकता है या कोई? एक सेकेंड, 15 से 20 वाली पे क्लोज करना। अब देखें हम उस पर मेंशन करेंगे कि हमें 5 दिन तो चाहिए कम से कम, राइट? 5 दिन इंस्पेक्शन होगी और उस 5 दिन में फिर हमें बायर फाइंड करना पड़ेगा, तो हम ज़ीरो इंस्पेक्शन के साथ नहीं भेज सकते, बट ये कर सकते हैं कि उसकी कॉस्ट ज़्यादा है नहीं तो कैश को फिगर आउट कर लें, ठीक है? अगर आप ऐसा करो, जो आपने मुझे लिस्ट भेजी है ना, वो तो मैंने चेक कर ली, पूरी लिस्ट है। आपने शायद नोट्स में भी लिखा हुआ था उसमें, बट उसमें जिस पे आप 25 डेज़ वाली बोल रहे हो, तो उसी नोट को एडिट करके ना उस पर ब्रैकेट पे 25 डेज़ लिख दो, ताकि आई विल चेक इट अगेन। बट आपकी ठीक सारी सबमिट है, वी आर ऑल गुड टू गो ऑन दैट, देयर इज नो इश्यूज देयर। ठीक है ठीक। यानी कि अब इसका थोड़ा-सा मुझे ये यहाँ पे भी मालूम ये करना था कि अभी ये आगे भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए चली गई या क्या? पेपर वर्क के लिए भेज दिया, कॉन्ट्रैक्ट एजेंट लिख के देगा, राइट? तो अच्छा एजेंट यूजली इसमें 2 दिन लगाता है कम से कम कॉन्ट्रैक्ट लिखने में और सेंड करने में। यानी कि सेल हो जाएंगी हम बाकी कॉन्ट्रैक्ट के पहले। अंदर तो चले जाएंगे, उसका मसला नहीं, क्योंकि आपके पास डिस्काउंट इनफ है, कंपेरेबल्स हमारे नहीं दिख रहे बट डिस्काउंट डिसेंट है, तो कॉन्ट्रैक्ट में चले जाते हैं, फिर देखते हैं कि हम इसको मार्केटिंग करके कहाँ तक सेल कर पाते हैं, ओके ठीक है? ठीक है, थैंक यू। No worries. Adnan, I'm looking at your messages. Sir, please tell me what is the rehab cost for this and is the ARV correct? Okay. More comparables. This is the property I'm dealing with. Okay. All right. Let's have a look at the Adnan's property. वो इस property को deal कर रहे हैं 70,000. Okay. Yeah, it's not a worse property, and let me check your comparables. Guys, अगर आप लोगों ने comparables नहीं सीखे हुए तो आपको सीखने पड़ेंगे। Again, videos already mention है because हम very soon एक और दफ़ा बात करूँगा comparables की, and then you have to run comparables on your own, ठीक है?
जैसे अदनान ने कंपेरेबल्स रन करे हैं ऑन दिस प्रॉपर्टी 32, 31, 31 और 149। अदनान एवरीथिंग इज़ गुड। आपने ये तो ठीक है कंपेरेबल्स, बट कंपेरेबल्स कभी भी फॉर सेल के नहीं होते। ठीक है, मेक श्योर करें हमेशा फॉर सोल्ड के हों या सोल्ड के हों। ठीक है, तो आई कैन नॉट काउंट दिस ए कंपेरेबल। आपने फिर मुझे 1 2 3 मोर कंपेरेबल्स। सर भाई वो कंपैरेबल्स वाली वीडियो आप टैग कर सकेंगे जो मैं मुझे सीधा समझ नहीं आ रही थी। वो लास्ट से 3 क्लास पहले की क्लास थी। आई कैन चेक, आई कैन ट्राई टू फाइंड एंड देन पुट इट इन द डिस्कॉर्ड इन द क्लास रिकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे मेरे को उसकी अभी समझ नहीं आ रही थी इसलिए मैं कंपैरेबल्स कर नहीं रहा। आपने मुझे बार-बार कहा लेकिन मुझसे हो नहीं रहे थे ना। ठीक है, मैं ऐसा करूँगा, एक और क्लास कर लेंगे कंपेरेबल्स पे और उसको एक्सप्लेन कर लेंगे। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, नो वरीज। 3 2 3 2। Yeah, Adnan, I think comparables are fine for now. I have to check it even more deep. मसला ये कि हमें ARV देखना है और आपका डिस्काउंट देखना है। ठीक है, 30% आपको डिस्काउंट मिल रहा है अदनान इस पर। सॉरी, 40%। वी नीड एटलीस्ट 40% डिस्काउंट आना है। Mr. Adnan, if you're here, I'm waiting on you. Okay, looks like he might not be here. That's okay. कभी कभी डिस्कॉर्ड में माइक ऑन रहता है और कभी ऑफ वॉइस। हुसैन, आई थिंक समथिंग इज़ विथ द नेटवर्क। ठीक है, पाकिस्तान में शायद ये होता है कि डिस्कॉर्ड इज़ अ वेरी हैवी प्लेटफॉर्म, तो आवाज़ अगर आपका नेटवर्क कंडीशन बहुत अच्छी है तो आवाज़ आपको पूरी आ जाएगी, राइट। बट अगर नेटवर्क लूज़ होता है तो स्क्रीन आपको दिखती रहेगी बट आवाज़ ख़राब हो जाती है। ब्रो, जिस प्रॉपर्टी के कंपेरेबल्स अच्छे हैं उसका 30% ऑफ 38K बन रहा है, उसको क्या ऑफ़र दूँ? क्या 44 से स्टार्ट ले सकता हूँ? 43 से स्टार्ट ले 42 से स्टार्ट ले सकता हूँ? या आई गेस आप स्टार्ट तो 38K से लें, 42 पे फाइनल कर दें, राइट। अगेन डिट्रॉइट की है, मैं समझता हूँ कि इसमें कम डिस्काउंट पे भी चल जाएगी, बट आपको डिस्काउंट तो चाहिए होगा। ठीक है, इट्स इम्पॉसिबल कि हम ओनली 10-15% डिस्काउंट लें और it's a good one, right? So that's the whole thing. Heather, I sent you a link of the property as well. He just sent me. Okay, guys, again, hashtag submit. ठीक है, प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी हैशटैग सबमिट में आ रही है, इट्स अ रियल प्रॉपर्टी। ठीक है, फेक ना हो। द सेकेंड थिंग, अगर सबमिट हो गई है तो अगेन आप फॉलो अप करें मुझसे या क्लास में अगर आपकी डील मिस हो गई है तो। ठीक है, Eamon said that she submitted, but somehow we never got it. Somehow we never. I was actually checking it with the team right here. This is all the properties, right? But we didn't find it in there. I don't know if it didn't submit or what really happened. Not sure. And it's been 3 days, so that's bad. ठीक है, अगर 3 दिन हो गए that's bad. एंड अगेन एवरी डे दैट कम ऑन क्लास मुझे नोट मिलता है कि किसकी क्या प्रॉपर्टी है, कितने की जा रही है और क्या प्रोग्रेस है। मैं क्लास के स्टार्ट में आके एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो मेक श्योर अगर आपको डील को अपडेट लेना है तो प्लीज़ कम इन द स्टार्ट ऑफ द क्लास, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, डील का आपको पता चल जाएगा। फिर अगर आप चाह रहे हैं कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ तो एक अलग बात है। मिस्टर अदनान, कैन यू हेयर मी? You can speak now. Okay, Adnan, I was just checking your property. आपके कंपेरेबल्स ठीक है, मुझे ये पता करना था कि आपको इस पे कितना डिस्काउंट मिला है। ठीक है, एंड अगेन एनीवन नेम एरिक जॉनसन? हु इज एरिक जॉनसन इन आवर क्लास? मिस्टर एरिक जॉनसन।
Adnan, what is your discount on this? Okay, well, looks like Adnan may be busy, guys. I'm gonna end the class here. I will talk to you guys inshallah tomorrow, and we'll go from there. Eamon, what you can do, send me, actually do the hashtag submit again from your side. I'll check with the team from my side on your property. Okay. Let me check if I got the right one. This is the property, correct, that we are discussing? I saved this one already. Harry, you have a text. What is this? Okay, I won't be able to take class tomorrow. I have a flight tomorrow, but yeah, I'll run the numbers on the property. Sure. Harry, how are you flying so much, man? You're never at one place. Tell me the secret. Eamon, just to confirm, this is the property, correct? I think Eamon is dropped out. Alright. Okay. I'll let you know I didn't receive the thing. Refund of what? Oh, the fees? It might take a little bit of time. It might take a little bit of time, Harry, but again, it's all computer system. We don't deal with it. Once we approved, it should go through it. Just check your subscription if it's approved, okay? If it's not approved, then it's a problem. If it's approved, then yes, it will take some time to get back to you. No, we approved it, so it shouldn't deduct from you. In fact, it should add up, right? But I told the team the same day. I think they approved it the same day, the refund. Okay, all right, guys. I'll talk to you guys tomorrow, inshallah, and we'll go from there. I'll stay on YouTube for like 5 minutes, and then I'll leave there as well. Okay, bye for now, guys. Talk soon. Okay, guys, I'm going to answer some of your questions real quick. अगर आपके क्वेश्चन है तो please let me know. What is your nature, brother? My nature? Or WhatsApp number? I don't have a WhatsApp number to share. It's more so a WhatsApp group, okay? Dash Pulsar, please join Discord. It's not a problem. Please tell me A to Z the method of joining the Discord. Dash Pulse, अगर आप हैं यहाँ पर, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर चले जाए, वहाँ पे एक वीडियो पिन है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू जॉइन डिस्कॉर्ड, ठीक है? प्लीज़ वो देख लीजिएगा. मोहम्मद आफ्ताब, वालेकुम अस्सलाम. लाइव की टाइमिंग क्या है, स्टार्ट टू एंड? मोहम्मद अफनान, आपका अफनान नाम था, और no, this is different people. Afnan, the live timing is from 9 p.m. Pakistani time, Indian time 9:30, and 9:50-ish for Bangladesh, to 4 hours from there. 9:50 to 4 hours. I do 2 hours of the class, so Discord class, and after 2 hours, I go on lives like with you, like I'm doing right now, and then talk to you guys there. How to join your Discord, sir? Yes, I mentioned that. I'm sorry, Sarah's not here. Furqan Afzal, Sarji, contact me. Assalam, sir. Walaikum assalam. I understand something. I understood something. Okay, what did you understood, guys? Guys, अगर आप YouTube live पे हैं, 2 minutes. Please give me your questions. अगर मैंने answer नहीं करे तो sorry, I was in the class. Plus, I have to go right now. तो आप मुझे 2 minute में अपना question भेज दें. मैं उसको लाजमी respond कर दूँगा. Alpha Gaming, how you doing, man? How are you doing? Okay, no questions. आप लोगों को सब समझ आ गया है? What can we send the contract directly to the agent from Pakistan? Can we send the contract directly to the agent from Pakistan? Contract तो agent लिख के देगा ना, तो एजेंट को कॉन्ट्रैक्ट लिख के देता है, साइन करनी होती है, या आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाना आता है कि एजेंट बहुत पैसे चार्ज कर रहा है, ठीक है? कभी एजेंट 100-150 में मान जाते हैं, नहीं तो बोलेंगे नहीं मुझे 500 दो, 600 दो. That takes time. Amen, I asked in the class, I sent you the link. I didn't send you the link, but I need
Eamon, do me a favor, do the hashtag submit again, and also send me the text as well. Okay, I told them that you were sending the hashtag submit again, so have a look at it right away. I told you yesterday that the agent is asking for the commission. He is saying that he is taking half of the amount. The commission is 2500. या एजेंट को कमीशन तो देना पड़ेगा ना, एजेंट को तो देना है हमने कमीशन। टेक्निकली हम नहीं देंगे, सेलर देता है। आपने नहीं देना होता, ना मुझे देना होता है, सेलर को देना होता है। सेलर एजेंट का कमीशन, सेलर के अपने एजेंट का कमीशन और बायर के एजेंट का कमीशन। ठीक है, हम बायर का एजेंट नहीं लेके जाते तो उसके पैसे बच जाते हैं यहाँ से। Well, now I should not send any email on Friday, Saturday, Sunday, or what time should I send it on Monday? Yes, आपने 10 ईमेलें डेली करनी है, नो मैटर व्हाट। ठीक है, अगर इस टाइम पे आप नहीं कर रहे तो आपने ईमेल तब भी करनी है, उसको स्केड्यूल कर दें मंडे के लिए। ठीक है, इट डज नॉट मीन दैट आपको छुट्टी मिल रही है हफ्ता इतवार की। नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट अदनान। अगर आपको कोई बोले कि आपके पास एजेंट नहीं है तो मैं शो नहीं करूँगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपने आप एजेंट का काम घर शो करना है, भले आपके पास एजेंट है या नहीं, डजंट मैटर। आई वुड लाइक टू रिप्रेजेंट यू करेक्टली, आई वुड ग्लैडली डिस्कस रिप्रेजेंटिंग। यस, अगर बोले कि भाई आप मुझे रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो, ठीक है, मुझे रिप्रेजेंट कर लो, बट मैं नहीं पे करूँगा, आपकी कॉस्ट मेरी तरफ की सेलर पे करेगा। ठीक है, अफनान, यस आई रेड दैट, आई जस्ट गिव यू द आंसर अदनान। ठीक है, अगेन उसको बोल दो यस, हम पे, आप मुझे रिप्रेजेंट कर लो, आप मेरे एजेंट भी बन जाओ, और अगर ऐसा है तो सेलर पे करेगा, मेरी तरफ के पैसे मैं पे नहीं करूँगा। ठीक है, अगर कॉल करने का बोले तो आप अगेन क्लास में आ जाइएगा डिस्कॉर्ड में, मैं कॉल कर लूँगा आपके बिहाफ पे। बाकी हाँ, उस एजेंट का आप दिमाग थोड़ा सा ठीक करते। ऐसा नहीं होता कि आपको एजेंट होना लाजमी है। एजेंट की ना सेल करने में ना परचेस करने में कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एजेंट का कोई काम नहीं होता, ना ही सेल करने में ना ही बाय करने में। आप अपनी तसल्ली के लिए एजेंट को रखते हैं, दैट्स इट। ठीक है, लॉयर्स काम करते हैं, लॉयर्स के बगैर या टाइटल कंपनीज के बगैर सेल नहीं हो सकती। ठीक है, और गाइस I'll end it here. I'll go back live tomorrow inshallah. We'll do a little bit longer live. आज थोड़ा सा मुझे काम था तो we did it less. ठीक है, I'll see you guys tomorrow. Bye for now.